This is the question in which you can calculate the NAV of a mutual fund, net asset value of a mutual fund. The portfolio details of a fund are given below. Stock A, B, C, D. Number of shares 100, 200, 300 and 200 respectively, and market prices are 35, 40, 20 and 25 of these stocks. Now this is the fund allocation in the 4 stocks. Fund has accrued liability, that means outstanding expenses amounted to rupees 2500. Calculate the net asset value if outstanding units are 2000. Now these are units, number of units. These are stocks, number of shares. Multiply the number of shares with market prices. You will get the total value 100 into 35, 3500, 200 into 40, 8000, 300 into 20, 6000, 200 into 25, 5000. Make a total of the investment amount 22,500. These are the stocks purchased at 22,500 rupees. Now this is the investment value. Investment value is 22,500, and the expense of this fund, the management fee, the expenses related to administration, employee salary, okay, for handling a mutual fund is 2,500. Okay, minus 2,500 and divided by number of closing units. These are the units, net units 2,000. So NAV comes at 10 rupees per unit. Now we are solving closing NAV. We are calculating closing NAV, assuming a sale and purchase NAV to be rupees 21. That means the selling price of mutual fund and purchase price of NAV. Purchase price of mutual fund is 21 only. Now this is opening NAV. That means the yesterday's previous day price is called as opening NAV. In the morning when market opens, it opened at NAV of 19.5. Yesterday's closing is the next day's opening NAV. Next, outstanding units are 51,000 units. These are the units sold in the market. Portfolio appreciation is 9,000. Units subscribed 3,500. Units redeemed 2,000. Dividend received 1,000. Expenses 2,000. Dividend received is 1,000. Units redeemed is 2,000. Units subscribed 3,500. Expenses of the fund is 2,000. पोर्टफोलियो एप्रिसिएशन क्या है यहाँ पर, यानी कि जो भी हमने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है उसकी प्राइसेस बढ़ी है. ठीक है, जहां पर भी म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया है वो सारी स्टॉक्स में एप्रिसिएशन देखा गया है. 9,000 रुपीज का वहां पे एप्रिसिएशन है. अब दूसरे न्यू बायर्स जो मार्केट में बाय कर रहे हैं वो 3,500 है. न्यू बायर्स इन दिस म्यूचुअल फंड आर 3,500 and the sellers of mutual fund redeeming, they have sold 2,000 units on a particular day. So this is 1 day data. Dividend received on the stocks in which we have invested is 1,000 and the expense is 2,000. Expenses like administration, management fee of a mutual fund, that is 2,000 rupees on a particular day. So this is 1 day's data. मार्केट खुला उस टाइम पे ओपनिंग एनएवी, उसके बाद उन्होंने देखा हमारे कितने यूनिट्स मार्केट में हैं. ऑलरेडी 51,000 हमने सेल कर चुके हैं हम लोग. उसके बाद हमारी पोर्टफोलियो जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट्स है स्टॉक्स और बॉन्ड्स में, वहां पे
ग्रोथ हुआ है 9,000 का. सो दिस इज प्रॉफिट बट नॉट रियलाइज प्रॉफिट. दिस इज स्टिल इन द, इट इज अनरियलाइज प्रॉफिट. ओके, 9,000 सिर्फ बड़ा है, मैंने बेचा नहीं है. ठीक है, यूनिट सब्सक्राइब जितने भी यूनिट्स अभी बाय हुए हैं आज के दिन पे और जितने यूनिट्स आज के दिन पे सेल हुए हैं स्टॉक मार्केट में, ये बाय हुए 3,500 न्यू बायर्स और ये सेलर्स है. डिविडेंड रिसीव्ड, जिन स्टॉक्स में हमने इन्वेस्टमेंट किया उसी स्टॉक्स में हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है. नेक्स्ट इज एक्सपेंस ऑफ 2,000. दिस इज द एडमिनिस्ट्रेशन फी ऑफ अ म्यूचुअल फंड. नाउ वी आर कैलकुलेटिंग क्लोजिंग एनएवी. Closing NAV means when the market is getting closed, that time we have to declare what is our price. Okay, what is the price of mutual fund? Because mutual fund is having investment in different securities, so they have to calculate the closing NAV on daily basis. If it is a close-ended fund, then also, or even if it is a open-ended fund, on daily basis they have to calculate the NAV, that is price of a mutual fund. So market is closing at 3:30. That time you have to calculate this. Opening value is 19.5 into number of units, outstanding units. Okay, then you have market appreciation, that is 9,000. First you multiply 51,000 into 19.5. $9,94,500. सबसे पहले ओपनिंग एनएवी को नंबर ऑफ यूनिट्स, जो मार्केट में जितने यूनिट्स हैं उससे मल्टीप्लाई करके ओपनिंग वैल्यू निकालना है. यूनिट्स और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है. एनएवी क्या होता है? प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड. ओपनिंग प्राइस ऑफ म्यूचुअल फंड इज 19.5. व्हेन यू मल्टीप्लाई विद यूनिट्स यू विल गेट ओपनिंग वैल्यू ऑफ म्यूचुअल फंड. एड द एप्रिसिएशन. अगर यहाँ पे डेप्रिसिएशन होता तो हम लोग क्या करते? लेस करते. एप्रिसिएशन है तो ऐड करेंगे 9,000. उसके बाद यहाँ पे जो सब्सक्राइब्ड हुए हैं यूनिट्स और रिडीम्ड हुए हैं, आप देखोगे यहाँ पे 3,500 यूनिट्स बाय हुए हैं और 2,000 यूनिट सेल हुए हैं. तो नेट बाइंग कितनी हुई है? एनीबडी फ्रॉम द क्लास टेल मी. नेट बाइंग ज्यादा हुई है तो 3,500 में से 2,000 माइनस करो. 1,500 की नेट बाइंग हुई है. ठीक है, यानी 1,500 की बाइंग हुई है और उसकी प्राइस है 21. 1,500 इंटू 21. सेल प्राइस एंड परचेज प्राइस. सेलिंग प्राइस 3,500 यूनिट सेल 21 पे हुए और 2,000 यूनिट्स बाय हुए 21 पे. तो 3,500 माइनस 2,000, 1,500 यूनिट्स इनटू प्राइस ऑफ 25. नेक्स्ट इज डिविडेंड रिसीव. डिविडेंड रिसीव को 1,000 प्लस करेंगे, एक्सपेंसेस हम लोग माइनस करेंगे माइनस 2,000. जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे क्लोजिंग यूनिट्स से. क्लोजिंग यूनिट्स कैसे निकालना है? Closing units is equals to opening units plus subscribed units minus redeemed units. 51,000 plus 3,500 new units bought minus 2,000 units sold. बाय वाले प्लस करना है, सेल वाला यूनिट्स लेस करना है. टोटल यूनिट्स हो गए 52,500. एंड आफ्टर एडिंग ओपनिंग वैल्यू, मार्केट एप्रिसिएशन, नेट प्रोसीड्स and adding dividend and deducting the expense, you have to divide with the closing units of 52,500. So this is the closing NAV of 19.69.